prenatals. Prenatals is a series that we are doing for our patients who are pregnant and जिसे हम कहते हैं एंटीनेटल क्लासेस या प्रीनेटल क्लासेस, जिसमें हमारा मेन फोकस ये रहता है कि आपके जो प्रेगनेंसी रिलेटेड क्वेश्चंस है और वो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस है उसके बारे में हम आपको बताएं. And हर बार we come up with some of the other topics. In this series we have covered various topics like nutrition, exercise, role of partners in pregnancy, Garbha Sanskaar. We talk about things like common issues in pregnancies, common complications in pregnancies and how to deal with them. And labor, कि जब दर्द चालू होगा और जब बर्थिंग प्रोसेस चालू होगा तब आप क्या कर सकते हैं. तो ये सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग एवरी फोर्टनाइटली डिस्कस करते हैं. एंड दिस इज़ व्हाट इज़ अ सीरीज़ विच नॉर्मली हम फिज़िकली किया करते थे अर्लियर बिफोर द लॉकडाउन. And we used to have so many people coming here and we used to have all these sessions, but now we have switched on to the online mode. And of course there are some of our people who are coming here physically also, but for some reason, because of all the love and respect that I get, I have not stopped the online method, so we have continued the online method. Good morning Barkha, good morning Ritika. So we are going to be having this session. Hi Asma. We're going to be having this session where we're going to be discussing about Garbha Sanskaar. Garbha Sanskaar. Now when we talk about Garbha Sanskaar, our main agenda is this, that कि actually Garbha Sanskaar है क्या, right? And why are we talking about this in our antenatal class? Is there any science to it? क्या ये conceptual है या actually इससे फर्क पड़ेगा? Hi Ruchi, hi Swati, Jasmine, Asma. Okay, I'm seeing so many of you have already joined in, right? So what we're going to do is that let's first start with this concept of why we need to know this. What is this गर्भ संस्कार? So आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि गर्भ संस्कार है क्या. गर्भ संस्कार के बारे में जब बात करते हैं तो डज इट रियली हैव एन इम्पैक्ट, और अगर गर्भ संस्कार अगर इम्पैक्ट करता है तो हाउ विल इट इम्पैक्ट, एंड अगर गर्भ संस्कार के लिए हमें कुछ करना है तो हम क्या कर सकते हैं. व्हाट आर द टूल्स दैट वी कैन डू और व्हाट आर द ट्रिक्स दैट वी कैन डू which will help us to solve it. Oh, hi Shilpa. Shilpa, I would have loved if you would have been here, but nice to see you there online. Adila, Swati, Ruchi. Good. So what we're going to do is let's start with the first concept. The first concept is this, that गर्भ संस्कार, इसका मीनिंग क्या है. ठीक है. First of all, we know that sanskar which we give during गर्भावस्था, प्रेगनेंसी के समय, during the journey of pregnancy, whatever good values you give, sanskar means good values. Okay. Now, when does the sanskar enter in? You know, people have a belief that so those who believe in afterlife and punarjanam, they always say that sanskar is something which our soul carries from one generation to another. Well, that's a good concept because that helps us to think that okay, let us do good, otherwise अगले जन्म में हम खराब और गलत संस्कार लेके जाएंगे. अदरवाइज हर इंसान जो मरने वाला है बोले बाहर में जान दो, अब क्या फ़र्क पड़ने वाला है, पुलिस पकड़े नहीं पकड़े क्या ही मत पड़ेगा. बट दैट फीलिंग कि वी आर गोइंग टू कैरी the sanskars to the next generation is the one which keeps us in discipline and in check, that let's be nice people and let's do the right thing and let's not kind of get into a situation where we are doing something wrong by our conscious. So that is the reason why we say that. But the second component is the influence of parents and environment. Influence of parents and environment जो हमारे संस्कार या good values को बनाते हैं. So how is it that these good values are created in our journey of life? So what is the first instance when it is created? The first instance when it is created is during the pregnancy. So not after delivery, right from the time of conception, these good values are created. And when we talk about these good values, we are talking about इसमें वो PPT खोलो, अगर हम दिखा सकेंगे तो इसमें चालू करो. Where is it? So when we talk about the various different sanskaras, so our first, let me see if I can show you this slide. This is okay. So when we have this in mind, that what and how does this concept comes into play, you need to understand that it is not just the role of mothers. Let me see if I can show you this slide. Okay, so this is one of the slides which I always like to show. You have to switch the camera. Okay, so when we talk about Garbha Sanskaar, it's open in this. Okay, we'll try to
we'll try to, and this is getting difficult. Let it be. छोड़ दो. The first relevant question about गर्भ संस्कार comes from बरखा त्रिपाठी. सर मेरा 5th month चल रहा है, क्या मेरा बेबी मुझे सुन सकता है? Well, that's what now gradually the ability of the baby to hear the sounds is starting to develop, and the vibrations and the mother's sounds are going to be happening. Baby may not decipher the language, but the baby can decipher the emotions that you are carrying. So that is what is most important बरखा इसमें. Asma, we are not talking about hysterectomy right now. Maybe towards the end we will talk about it. अभी हम हमारा सारा focus प्रीनेटल एजुकेशन पे होगा और गुड वैल्यूज़ एजुकेशन पे होगा जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. So when we talk about this, it is not just a job of the mother, it is a job of both combined parents and also the grandparents and other people around the family. Okay, so there is a role to play for everyone. Now, life does not begin at the time of birth, it starts at the time of conception. जब एक स्त्री बीज और पुरुष बीज, ओवम एंड स्पर्म कंबाइन होकर फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो बनता है. From that time onwards, the changes start stimulating things, and that is where the whole concept of epigenetics comes in. Now, what is epigenetics? Epigenetics मतलब आपके पास में जो क्रोमोसोम्स हैं, जो हस्बैंड वाइफ से आए हैं, दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, दोज आर ऑलरेडी देयर. नाउ दीज 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो कंबाइन होकर एक बेबी का सेट क्रोमोसोम बनता है. अब वो बेबी के अंदर चर्निंग होकर उसके अंदर क्रोमोसोम्स सेट होते हैं. अब जब वो जो क्रोमोसोम्स सेट होते हैं, दे हैव टू फॉर्म अ प्रोटीन और फॉर्म अ बेबी. Now when they form a baby, after the all the information, it is getting all the raw material from everywhere, and then they form the baby. And when they look at this, right, the complete package of the formation of the baby, the conversion of this information into action के अंदर अगर कोई टॉक्सिन्स आए या एक्सपोजर टू इन्फेक्शन हो गया या एक्सपोजर टू केमिकल्स हो गया, सो वो एबनॉर्मैलिटी होने के चांसेस हो जाते हैं. And this is called as epigenetics. So it is not just the genes but also the factors which helps in formation of those proteins from the message from the genes, which is important component. So एक ही क्लोन अगर एक ही प्रेगनेंसी का क्लोन अगर 5 अलग अलग लेडीज़ में डाल के उनको डिलीवरी के लिए 9 महीने बाद मिलते हैं, सो हर बच्चे का दिखने में हो सकते हैं सेम हो, बट उनका हेल्थ इश्यूज़, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इश्यूज़ अलग अलग होगा. ज़रूरी नहीं कि सबके वजन सेम होंगे, ज़रूरी नहीं कि सबके आगे लाइफ में जाके रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन सेम होंगे. जेनेटिक डिजीज़ येस, बट जो अदर फैक्टर्स है लाइफस्टाइल डिजीजेज वो अलग होंगे. सो यू नीड टू रिमेंबर दैट दिस इज़ हाउ इट डिफर्स, एपिजेनेटिक्स. सो यहाँ ये कंसेप्ट आता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आप एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट देते हो, दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट on the baby, and that is there is no doubt that it is something which we need to take care. So ये concept तो हो गया कि गर्भ संस्कार ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी जो हम करते हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है. अब व्हेन वी टॉक अबाउट द कंसेप्ट्स इन माइथोलॉजी और लिटरेचर, सो वी हैव सीन इन मोस्ट ऑफ दीज माइथोलॉजी लिटरेचर या हमारे रिलीजियस टेक्स्ट बुक सब जगह लिखा गया है और ये कंसेप्ट बताया गया है. डज एनीबडी नो दिस कंसेप्ट? किसी ने सुना है ये कंसेप्ट कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई और वो कैरी फॉरवर्ड हुआ? Anybody knows? अगर है तो चैट में प्लीज़ लिखिए. And if it is so, okay. So I have you must have heard of stories from Ramayanas and Mahabharatas and Bibles, etc. Okay. Anybody? Yes, Ritika is saying Barkha. Yeah. What story you have heard about antenatal period के अंदर ये information दी गई थी गर्भ संस्कार के बारे में? You remember? Anybody remembers? Vikesh, okay, Abhimanyu Chakravyuh, right, Ritika? You're saying right. So you're correct. So Barkha is also saying the same thing, right? So Shilpa, Pooja, everybody has come to the concept of Pooja is also saying that it is about Abhimanyu, right? So you've heard the story about Abhimanyu. I'll tell you about this in a small brief way. Abhimanyu was son of Arjun, okay? And when what had happened was that there was a concept of Chakravyuh which was created. So Arjun and I think Subhadra, his wife, were having a chat and they were discussing about the concept of Chakravyuh, which is a kind of a war strategy or a tactic which was explained. But unfortunately, before Arjun could explain how to get out of it, probably in some stories they say Subhadra slept away or Arjun left the
conversation, and he went away because of some work, and then ultimately she could not hear the whole story. So when actually the war happened, one of the most important stage in the war was that the Chakravyuh was created to kill the king of the opposite side, that is Yudhishthir, of this side, the good side, and the evil side. Duryodhan and the whole team created this Chakravyuh. But Abhimanyu said that I know about Chakravyuh, let me handle it, and he took the bait and he sacrificed himself, right? So that was the concept. But here I would say that focus on this concept. That means it's not just today. There has been discussion about this a lot. Jasmine is talking about Bhakta Prahlad. Okay, we'll talk about the Bhakta Prahlad story also. But Bhakta Prahlad story was not just about the story of education during this journey of pregnancy, but it was beyond that. Now भक्त प्रहलाद स्टोरी में जसमीन ने जो कहा है, वहाँ मैं एक कंसेप्ट बताऊँगा. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. देयर वाज वन पेशेंट ऑफ माइन, बोले कि हम बहुत पॉजिटिव हैं, हमारा आई एम वेरी पॉजिटिव एंड आई एम बीइंग वेरी नाइस एंड आई एम ट्राइंग टू टीच गुड थिंग्स टू माई चाइल्ड एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग नाइस, बट मेरे घर का माहौल फेवरेबल नहीं है. People around my house are not so supportive, and so she said that my in-laws and my husband, they are into that kind of business जहाँ वो लोग बहुत गाली गलौज करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं अपने ड्राइवर्स और जो लेबर फोर्स है, ऐसा ऐसा है. बोले आई एम टायर्ड ऑफ टेलिंग देम दैट ट्राई टू बी काम, एंड दे आर सेइंग कि नहीं ये लोग यही भाषा समझते हैं, मुझे ऐसी बात करनी पड़ेगी, एंड आई एम नॉट एबल टू कन्विंस देम. व्हाट शुड आई डू? सो सी, भक्त प्रहलाद की स्टोरी गिव्स अस दिस स्टिमुलस दैट जस्ट एक मदर थी ना. भक्त प्रहलाद के जो फादर थे, ओके, Hiranyakashyap, if I'm not mistaken. So basically what had happened was he was a big deity. He was a big bhakt of Lord Shiva, and he prayed a lot, and then Lord Shiva gave him the grant, and Lord Shiva उनको वरदान दिया कि मांग क्या चाहिए, and he said कि मुझे I want to be Amar. I want to be a person who cannot be killed. So he said, no, you cannot. Only the gods can be Amar. Human beings cannot be. He said, okay, then give me a wish that न ज़मीन पे, न आसमान पे, न दिन में, न रात में, न घर में, न घर के बाहर, न इंसान, न जानवर, न पुरुष, न स्त्री, न अस्त्र, न शस्त्र, कोई भी चीज़ मुझे ना मार सके. None of these things should kill me. Now, when he got that vardhan, so he then behaved ulta. He says, okay, now I've got this vardhan, means nobody can kill me, I'm as good as Amar. So he said, now everybody start praying me, I am God. And he became very atrocious, and he became very aggressive and started attacking everyone around, and all those things. So at that time, if anybody used to pray to God, he used to oppose that. And he says, no, don't pray to God, pray to me. But his wife believed that God is powerful, and she gave the mantra of prayers to her child. And the child, Bhakt Prahlad, used to do Narayan, Narayan, and pray to the God. And she also did one more thing. She sent her child to Gurukul for education, for good education, and imparting good values to the child. Meaning, when this happened, even when he came back, Bhakt Prahlad, the Hiranyakashyap was very angry against him, and he wanted to finish him off. And जो होली की पूजा होती है, होली का दहन होता है, तो वो बुआ कहते हैं, वो इसकी बुआ थी जो बच्चे को लेके फायर में बैठी, लेकिन she got destroyed but the child did not get destroyed. And then ultimately Lord Vishnu took an avatar of Narsimha, which was half animal and half this, and then ultimately he destroyed the ego as well as the body of the father or the king. Now this is the story which gives us an inspiration that अगर एक माँ चाहे तो कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकती है. If a mother decides that I want to give good values to my child, she is going to be successful in doing that. So do not worry about just outside people. So just because external environment is not favorable, I'm going to fail as a mother. No, ऐसा नहीं होगा. So that is the story, Jasmine. So thanks for bringing up Bhakt Prahlad in the concept. Okay. Now Barkha is saying, sir, कौन से मन से हम ये संस्कार देना start कर सकते हैं? So I always say that charity begins at home. Meaning you yourself has to start thinking about the positive and the good values. When you start thinking about positive and good values, then you will be able to pass it on. And when do you start? You start from day one. Even before pregnancy also you can start thinking of positive values. And if you start thinking of positive values, it will be very easy for you to do that.
So now this brings us to the next concept कि can we have a checklist of good values that you want to give. So आप अपने बच्चे को क्या good values देना चाहते हैं, और जब आप चैट में डालोगे तो केवल आपके बच्चे नहीं, जो बाकी के जो मदर्स हैं उन्हें भी वो गुड वैल्यूज़ के कंसेप्ट समझ जाएंगे. तो कैन यू जस्ट पुट ऑन सम गुड वैल्यूज दैट यू वांट फॉर योर चाइल्ड. एनी वन वर्ड कि आई वांट माई चाइल्ड टू बी लाइक दिस, आई वांट माई चाइल्ड टू बी लाइक दिस, ये गुड वैल्यूज होनी चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट येस लाइक बरखा जैसे बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट, वेरी गुड बरखा. Anything else that comes on your mind? You can put in the chat. If you can hear me, try to put in the chat. So one is respect for the elders. Second, be truthful. Then be honest. Then come on. Keep putting in the chat. So when you start thinking of these positive values, you start thinking of those positive things, right? When you start thinking of these good, helpful, Quran is saying, right? Katyani, even if it is 8 months, you can still help. Loving and courageous, yes, that's also a good thought. I want my baby to be compassionate. Ritika, that's a good thought. Okay. Okay, keep on thinking, and you can keep on putting more thoughts. मैं अभी से start करती हूँ. That's right, Katyani. You can any day is good day. Okay. Geeta is saying, Geeta Agarwal ji कह रही है honest, yes. Okay. So see, now this is what I am trying to tell you. See, you are thinking so much about these good thoughts. आपके दिमाग में रिफ्लेक्सली ये गुड थॉट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसे आपके दिमाग में धड़ा 10-15 अच्छे थॉट्स आने चाहिए और फटाफट आने चाहिए. देन ओनली यू विल बी सी. अगर आपको मालूम है कि ये गुड थॉट्स की क्या वैल्यू है, तो ही तो आप अपने बच्चे को पास ऑन करेंगे. सो वेदर इट इज जेनरॉसिटी, पेशेंस, मॉडेस्टी, या गो एट पीसफुल हेल्पिंग, येस पूजा, दैट्स नाइस. आदिला से सर मेरा हस्बैंड अब्यूजिव, उस रीज़न से मेरी बेटी अब जिद्दी हो गई है, वो बहुत रोती है, डरती है, किसी से मिलती भी नहीं है. अदिला देखिए, जो भी इश्यूज़ हैं, इट एज आई टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ वक्त प्रहलाद, यू कैन स्टिल कीप ऑन बीइंग पॉजिटिव एंड शो द लव एंड अफेक्शन एंड गिव हर द हीलिंग एनर्जी. अगर आप उसे पॉजिटिव देंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा. फिर भी नहीं फर्क पड़े तो प्लीज़ एक अच्छे काउंसलर से मिलिए. Ritika says to be stable in all situation, handle in calm manner. Very good. As per instruction, I have started Garbha since my Shilpa Shubhra is saying, okay, yes, thanks Shubhra, good. You've started it right from beginning. That's a nice thing. Prerna Dalmia, truthfulness, yes, do not be selfish. Okay, hold on. Now, यहाँ बरखा में आपको एक चीज़ पॉइंट आउट करता हूँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़. सो ये कंसेप्ट आता है, वो एक किताब पढ़ी थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी शायद, रोंडा ब्रायंस की द सीक्रेट. एंड इस प्रकार के बहुत कंसेप्ट होते हैं. कभी भी नेगेटिव मत सोचो. Don't think that instead of saying he or she should not be selfish, say they should be selfless. Put in a positive thought. Okay, because whenever you think of a negative thought, that negative connotation comes in. So बरखा, अगर आपको कहना है कि मेरा बच्चा selfish नहीं होना चाहिए, you say मेरा बच्चा selfless होना चाहिए, मेरा बच्चा हेल्पफुल होना चाहिए, मेरा बच्चा काइंड होना चाहिए, मेरा बच्चा जेनरस होना चाहिए, मेरा बच्चा हम्बल होना चाहिए. इंटरेस्टिंग वे ऑफ थिंकिंग बरखा. द रीज़न आई एम सेइंग दिस इज, वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट इज बिकॉज जब हम कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, सो दे से द यूनिवर्स ओनली दैट रिमूव्स द यू नो, जैसे आज मैं आई वॉज स्टक अप इन सम केस इन वन एमरजेंसी एट कम इन, सो उसकी वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया तुरंत, इमीडिएटली शार्प एट 10. Okay, so I was all the time thinking, I want to be on time, there is the other way, I don't want to be late, I don't want to be late. अगर आप don't want to be late में ना, तो don't want गायब हो जाता है और खाली don't want to be late की जगह want to be late हो जाता है. ठीक है, तो don't निकल जाता है, नेगेटिव कॉन्कोकेशन में नेगेटिव चीज़ निकल जाता है. इसलिए ऑलवेज I want to be on time, I want to be on time, I want to be. So this is the way you should start thinking. So this is called as a positive way of giving affirmations in your brain. So जब आप positive affirmations देंगे ना, तो आपकी energy positive होगी. That's the trick which I wanted to add. Good that बरखा brought it. I was waiting कि कोई ना कोई ऐसा कुछ बोले और फिर मैं ये मौका लेके बोलूँ बरखा. So मैंने अच्छा हुआ आपने लिखा तो हम बता पाए. ठीक है. So कात्यानी saying सर मेरा एग्ज़ाम है तो स्टडी में टाइम जाता है. गुड. पढ़ाई अगर आप करते हो तो वो भी एक प्रकार का गर्भ संस्कार ही जा रहा है ना. अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हो आप, नॉलेज ले रहे हो, तो नॉलेज बच्चे को जाएगा. इट्स वेरी गुड. ऑल इन वन यमीज किचन, प्लीज सजेस्ट गुड बुक्स. आई हर्ड रामायण महाभारत शुड नॉट रीड. नो नो नो, इट्स नॉट दैट. यू कैन रीड इट. इनफैक्ट रामायण का जो बाल कांड है, when you read about the childhood stories of Ramayana, Lord Rama is the best thing to read for Garbha Sanskaar, because वहाँ सब जन अच्छे हैं, even कई मंत्रा भी अच्छे हैं, everybody is nice, so that's a good book to read, there's no harm in that. Shilpa is asking, does affirmation help in giving good values to the baby? Yes, of course. So basically it is all about, now this brings, Shilpa has brought up a very interesting point, कि क्या हम ये चीज़ें करते हैं affirmations और ये सब, does it really help in our baby to get those good vibes? So this brings us to the concept
कि अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं सो तो डज इज रियली हेल्प. सो चलो मैं आपको मेरे एक मेरी एक जर्नी के बारे में बताता हूँ. व्हाट आई डिड वाज आई वाज वेरी क्यूरियस कि डज दीज थिंग्स रियली हेल्प, और अगर ये हेल्प करती है तो हमारी किताबें या हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने इसके बारे में क्या लिखा है, एंड व्हाट द डिफरेंट kind of civilizations are talking about the same thing. So let me tell you one thing. When we are talking about these things, one of the biggest concept which comes in my mind is that what is this body made up of, and what are the factors which influence the making of this body. So when we talk about what is this body made up of, every civilization or every kind of customs is talking about the Panch Mahabhut. Panch Mahabhut matlab the 5 elements which come together and form any physical form. You know what are those 5 elements? Anybody knows what are those 5 elements? Anybody knows? Yeah, hi, thanks Vijay. Anybody knows the 5 elements? Please try to put down the 5. Yes, Geeta says water. Water is one of them. Yes, very good. Geeta Agarwal is saying water. Happy baby, wealthy baby, healthy baby. That's a good concept. Air. So Ritika has come up with the 3 concepts: fire, water, air. Okay, fire, water, air. So these, see the 5 elements: earth, sky, water, and fire. Very good, very good, very good. एक चीज मिस हो गया खाली. Okay, so we normally always say is the vayu, air. Okay, one thing. Second, sky. Okay, third, earth. Okay, I think Vanishri has written earth, sky, water, fire, और air मिस हो गया है. वो सर की जगह air गिन लो उसको. Okay, that's right. So I think that is air. So it's we always say this, Prithvi, Jal, Vayu, Agni, Akash. Okay, so Prithvi, Jal, Vayu, Agni, Akash means earth, water, air, fire, and sky. These are the 5 elements. They come together and form it. So because see, we all know that physical form cannot be destroyed. It is just changing from one form to another, right? And yeah, Karthikayani has summarized it it together. So basically, it is these 5 forms which come together. Now, I was also hunting how does this 5 form come together and form. So there was this nice book called Panchikrit. Panchikrit is a nice book which I read, in which the Shishya asks Guru, and the Guru that how and what different parts of body are being formed by different various different things. Which part of body is formed by which particular element. So the very beautiful answer comes in that book, and it says that when Lord Brahma is supposed to be the creator, Lord Brahma created these 5 mounds of these 5 elements, and then he picked up a fistful of one element and he mixed with the others, and then another element and he mixed with the others, and then another element and he mixed with the others. So there is most of the organs are made with a mixture, and that is what even the science says, that all the organs are made by 3 derms: ectoderms, endoderm, mesoderm. So there are different layers. So all the organs are made with different. The dominating component may be one thing, but the other component is like, for example, our circulatory system. The circulatory system is actually more dominantly created by the fire. इसलिए हमें जब गुस्सा आता है, anger आता है, या heart जोर से pump होता है, so what does it lead to? It increases the temperature, etc. The hollow cavities is made by the sky. That's why these sound comes, right? The earth forms of a bone and the skeletal-muscular tissue, and so on and so forth. Water is actually the major component of our body, and definitely it is the fluid in the body is coming from the water component. So all these things are actually justifiable. But then comes ki how do they get influenced? How do they get influenced? How does these 5 different elements get influenced? So जब बेबी को मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो इन्फ्लुएंस कैसा होता है? So we have 5 spatial senses. Okay, we have 5 spatial senses. Does anybody know what are our 5 spatial senses? जो हमारे रिसेप्टर है, हमारे 5 spatial senses. 5 spatial senses क्या है हमारे? Okay, just try 5 spatial senses. Like for example, vision is one of the spatial senses. What are the 5 spatial senses? Vision. What else? So now ear, right, and skin, that is touch, right? Geeta is said sound, that is 4th, right, Geeta? And last 5th बचा. So eyes, ears, nose, vision. एक चीज बता, taste. So these are the 5. So these are the 5 things, smell, sound, vision, touch, and taste. So these are the different
5 इंद्रियां कहते हैं. So these have a special connection to special parts. Like for example, smell is connected to earth, vision with fire, air, touch, akash, sound, and of course temperature is coming from this fire. So basically all these sensations that we feel or see or hear or smell or taste are having influence on these 5 elements. So moral of the story is this, that this is my personal interpretation of these concepts to make us understand that yes, these things work. I always say this, that you have a receptor in these 5 senses which influence your 5 elements, and those 5 elements are used in manufacturing of your baby. So कौन सा तत्व कितने अमाउंट में जाएगा ये आप खुद डिसाइड करते हैं. And that is on a spiritual or on a conceptual basis. और on scientific basis I would say that आपका मूड कैसा है वो डिसाइड करेगा कि आप खाना कैसे खाते हैं. आपका मूड कैसा है वो डिसाइड करता है कि आप रेस्ट कितना करते हैं. आपका मूड कैसा है वो डिसाइड करता है कि आप दवाई और मेडिकेशंस और सप्लीमेंट्स, आयरन कैल्शियम टैबलेट्स लेते हैं या नहीं लेते हैं, और कब लेते हैं, सिस्टमैटिक लेते हैं या नहीं. All those things have an impact on the manufacturing of the baby. And remember, you're not just manufacturing the baby. Remember the mantra I always say, you're not just manufacturing the baby, you're also programming the baby. So आप अपने बेबी को प्रोग्राम कर रहे हैं. अभी जो आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, that is going to impact the baby all the life till the old age. When the baby becomes old and when the baby is at a higher age, the risk of blood pressure, the risk of hypertension, the risk of heart disease, the risk of ischemic heart disease and heart attack, all diabetes, all these things are actually decided as per what kind of programming we are giving, not at a later stage only, but right from beginning during the journey of pregnancy. So that is the reason why you need to take care of that. Now, when we are, I'll answer. There are a lot of questions coming in. One of the questions does your act also affects? Yes, how we behave is definitely going to impact. Like for example, आपका behavior है कि आप पार्टी कर रहे हो, दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, obviously it's going to impact. अगर आप बहुत गुस्सा कर रहे हो, बहुत चिड़चिड़ कर रहे हो और बहुत irritable हो, obviously आपका peace of mind जाएगा, तो आपके hormones impact होंगे और hormones में. See, there are 3 major zones: oxygen, nutrition and hormones. ये तीनों disturb हो जाते हैं. जब आप अगर गुस्सा होते हो या चिड़चिड़े होते हो, ये 3 में से एक चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है, तो आपके बिहेवियर आपके बेबी की प्रोग्रामिंग पे इफेक्ट हो सकता है. बेबी की प्रोग्रामिंग इफेक्ट होने के लिए तीनों कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज ऑक्सीजनेशन, न्यूट्रिशन एंड योर हॉर्मोन्स, राइट? सो ऑल इन वन मम्मी यमी किचन दिस आंसर. देयर इज वन क्वेश्चन जस्मीन इज आस्क्ड, कैन वी यूज ईयरफोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? इज इट सेफ? ईयरफोन यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कितने डेसिबल्स पे उसका वॉइस रखते हैं वो मैटर करता है, क्योंकि वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए तो इशू नहीं होगा, लेकिन आपके हियरिंग के लिए बहुत इशू हो सकता है. इसलिए आपका वॉल्यूम आप कितना रखते हैं वो बहुत मैटर करता है. सो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ना रखें, जितना जरूरी हो उतना ही रखें, एंड दैट विल हेल्प यू. Zahanoro is saying, sir, natural labor, how to induce C-section patient? Well, I'll come to that. We'll discuss about that. We call it VBAC, vaginal birth after cesarean. मेरे काफ़ी सारे लाइव सेशन हमने वो डिस्कस किया है. आज हम लोग लेट्स फोकस ऑन गर्भ संस्कार फर्स्ट, एंड टुवर्ड्स द एंड वी विल ट्राई टू लास्ट फ्यू मिनट्स में हम उसके बारे में आंसर करेंगे. गर्भ संस्कार में कुछ और कंसेप्ट्स में आपको बताना चाहता हूँ. Okay, so when you're talking about all these processes, we have talked about the good thoughts, we have talked about the good values, but we also need to know that we need to keep the bad values away. Now, जब गुड वैल्यूज़ की हम लिस्ट बना रहे हैं, तो मेरा एक सजेशन है कि आप एक लिस्ट बनाएं, कागज़ लें, पेन लें या नोट पैड लें, या अपने नोट्स में, मोबाइल में आप जॉट डाउन करें ऑल गुड थाट्स, and then read about those good thoughts. Now, when you read about those good thoughts, you will understand the importance of those good thoughts and the concept of those good thoughts. When you are aware about these concepts, you will be able to give it to your child. आप अपने बच्चे को उसके बारे में सिखा सकेंगे, समझा सकेंगे, बता सकेंगे. Because if you tell this to your child in the right way, then it is very easy for child to grasp it. Remember, अगर सही और गलत की पहचान आपको ही नहीं है, तो आप अपने बच्चे को कैसे देंगे, है ना? सो अगर आप अपने बच्चे को सही और गलत की पहचान सिखाना चाहते हैं, तो यू ऑल्सो नीड टू हैव योर कंसेप्ट्स वेरी क्लियर. सो यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट एंड डू दैट. नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू वन ऑफ द मेजर कंसेप्ट्स ऑफ टुडे, दैट कि व्हाट आर द ट्रिक्स एंड टिप्स दैट यू कैन डू, व्हाट आर द टूल्स दैट यू कैन यूज टू हेल्प द बेबी और हेल्प यू टू डू गर्भ संस्कार. ओके, so Ritika is saying during pregnancy due to hormonal changes we have mood swings and we are annoyed sometimes. Does that affect the baby? Yes Ritika, definitely. आपके mood swings का impact आपके ऊपर, आपके बेबी के ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा होता है. So I think so Ritika, एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ. ओके, द कंसेप्ट इज़ कि आपका जो मूड है और इमोशंस है ये कंटेजियस है. कंटेजियस का मतलब समझते हो? इट स्प्रेड्स क्विकली, राइट?
So, Ritika, All in One Yummy's Kitchen is also saying that आपका नाम तो बता दीजिए, All in One Yummy's Kitchen and Travel. So they basically are. It's a universal issue. Mood swings is a very common thing. That has an impact. When we do the role of partners in pregnancy, उसमें हम इस चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं कि what are these mood swings and how to handle those mood swings, etc. ठीक है? Okay, that's Srilekha. All right. So when we're talking about the mood swings, basically you have to understand that the concept is this: that when you are not in a good mood, it immediately affects your child by virtue of your compliance to medicines, compliance to rest, compliance to nutrition, खाने पीने सब चीज़. अगर इंसान का मूड अच्छा नहीं है तो खाना ठीक से खाता है? नहीं खाता है, या तो बहुत ज़्यादा खाता है तो नहीं खाता है. आपको दवाई बाहर में जाओ यार, मुझे कुछ नहीं लेना देना यार, हटो. You have that feeling that is going to impact you. But more than that, the hormones, the stress hormones, the cortisols, the adrenaline and all those things that are pumped up is actually in the circulation, and it goes not just to you but it also is passed on to the placenta to the baby, और baby को वो higher level of hormones का exposure मिल रहा है जो कि आप नहीं देना चाहते हो. So all these things can happen. This is very common. So I think these are the few things that we can easily try to manage, which will help you to reduce the stress to the baby. Okay, and that will really make a lot of difference. Now let's move on to the other things that you can actually do to bring in. Shilpa is saying that, doctor, although I try to have good thoughts, still we have some bad thoughts or anger. How to handle it and keep it away from the baby? Well, yes, we are human beings after all. We are not gods, so we are going to have all our emotions, and we are all going to have these various different things coming and going. Gumata Nagri, she says, okay, she's Shruti from Karnataka. That's nice. Okay, so okay, Srilekha is saying that progesterone hormone के गोलियों से I think ज़्यादा होता है, which doc gives till labor. We don't give progesterone to everyone till labor. It's only for some patients. Sometimes we have to give because of some reasons. But yes, progesterone से mood swings होता है. You're right, Srilekha, that progesterone is one of the causes for mood swing. And actually pregnancy में progesterone होता है. वो गोलियाँ is not the reason. The tablet is not just the thing. Even if the people who are not taking the tablet, they have high progesterone. In fact, progesterone tablet is being given because suppose if your level of progesterone is less, so to keep it at a high level and a good level, that's why your doctor has prescribed you probably, and that is the reason why you're taking that. So it is not the medicines, but it is your body which is producing extra progesterone. In fact, progesterone ज़्यादा हमारे body में होता है, इसी वजह से तो pregnancy टिकी हुई है. अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल लो होगा तो अबॉर्शन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल लो होगा तो प्रीटर्म डिलीवरी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल होगा तो टाइम की पहले डिलीवरी हो जाएगी. सो दैट्स द रीजन व्हाई प्रोजेस्टेरॉन इज नेसेसरी फॉर द बॉडी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एंड दैट आल्सो हैज अ कॉज फॉर मूड स्विंग्स, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू हैव मूड स्विंग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. You're right, Srilekha. Okay, so let's go ahead and understand that what are the various tricks and tips that you can do, and what are things that you can do which will help you to understand and follow the concept of Garbha Sanskaar. So आप लोगों ने सब ने कुछ ना कुछ तो ट्राई किया होगा, right? Some say that we have heard music, some say we heard mantras, some say we do things. So let's make a list of things that make you feel nice. So what are those things which you do which makes you feel nice? You can jot it down because आप लिखोगे तो दूसरे को भी आइडिया मिलेगा कि ओके ये करने से हमें फ़ायदा मिलेगा. Please jot down some nice tricks and tips that you do. I have given you some suggestions. Like for example, reading a book, right? Okay, Jasmine has asked a question, how can sattvic food is best during pregnancy? We don't even have garlic and onion, it's okay for hormones of the day. We'll talk about that. Shambhu Maitri, cervix is in the second trimester 3 point normal, first pregnancy happened 6 month premature delivery. See, 3.1 is a normal length, anything less than 3 is something that we are worried about. But if it is 3.1 the second trimester, probably Shambhu, your doctor would advise you to start on progesterone, etc. and take care of it. So we'll answer that afterwards again, Shambhu, but yeah, this is something which you need to speak to your doctor and decide about treatment. Okay, Geeta ji is carrying and listening music. So that is one thing that makes you feel nice. Very good. This is one of the tricks. What more tricks other people can add? कि भाई ये हम करते हैं तो हमें काम लगता है, हमें पीसफुल लगता है, हमें अच्छा लगता है. सो एक म्यूज़िक सुनना है, सेकंड प्रेयर्स करना है, चाहे वो आप इफ़ यू आर मुस्लिम या नमाज़ पढ़ रहे हो, या अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो, या आप हिंदू हैं तो आप पूजा अर्चना कर रहे हो. ओके, Ritika says watching good videos. Yes, that is also another way of keeping your mind busy. But good videos meaning वो suspense और thriller movies नहीं देखनी है आपको काम चीज़. Listening to bhajans, then spiritual listening. Yes, that's a good idea, Srilekha. Then Shilpa, your husband is going to kill me if I say yes to that.
टू काम माई सेल्फ आई डू ऑनलाइन शॉपिंग. हाँ ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए और अपने बास्केट में या अपने शॉपिंग कार्ट में डाल के रख लीजिए. बिफोर यू प्रेस द बटन बाय, एटलीस्ट कीप इट इन द कार्ट फॉर सम टाइम एंड देन रीलुक एट इट एंड डिसाइड वेदर यू रियली नीड इट और नॉट. ओके, डोंट कीप बाइंग, शिल्पा. ओके, ट्रैवल. ओके. Definitely I see again and again Balkand of video. That's right, Katyani, you're right. That Balkand is definitely a good concept. Going to temples and meditation. Ruchi is saying yoga is also another good thing. Yes, Ruchi has been doing yoga sincerely, and I see that she really enjoys the yoga sessions that are happening at Lenest. Okay, rest. Yes, you are right. So let me put it this way. So you need to look at two things. One, how you can calm your mind and feel happy about it. Second, how you can improve your thinking ability and your analytical ability and your positive thinking. So ये एक एक्शन है कि जो आपकी जो एनर्जीज को काम करना, और दूसरा है आपके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को बढ़ाना. ये दो चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, एंड दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ गर्भ संस्कार. So for example, if you are reading a book, okay, when you are reading a book, you need to see to it that you pick up some nice big leaders or good people or intelligent souls and read about their life stories and read about them, and that will help you to understand the journey of these big people or influential people. So that will help you, in other words, to become. So suppose if you want your child to be an entrepreneur, it makes sense to read more and more about different entrepreneurs, how their journey was. If you want your child to be a religious leader or something, then read about how the lives and times of religious leader was. If you want to be have your child, like for example, when my mom, I asked her in one of the antenatal classes, one of the patients asked her, आपने क्या सोचा during the pregnancy? So my mother said that I always wanted my child to be a doctor, and here I am. And it does make a difference. What you think, do you know, we feel कि हम अगर चाहते हैं तो हमारा बच्चा वो चीज़ बनेगा, जरूरी तो नहीं है, ये फैक्ट है. लेकिन अगर आपने मन में बना लिया कि ये चीज़ आपके मन में है, तो it has an influence on the child. There is no doubt about it. Let me tell you one story. So when my child, he basically was shortlisted for what was that one dance show for children, and he was shortlisted for that, and he got selected. He was so good at dancing in the younger age, and I forgot the name of that show. It was a TV show which was there for children for dance and all that stuff. And on that day when there was final auditions, there was so much of rush and so much of line, and it was madness. There was this madness there. And I knew that waiting for so many hours and for that 1 or 2 minute ka thingy, and I asked my son, beta, do you want to wait here या crosswords में सेल लगी है, चल वहाँ जाके AC में बैठ के मस्त बुक्स पढ़ते हैं. I said, Dad, let's go there, let's not waste our time. And actually, हाँ, Dance India Dance, right, Shilpa, you're right, yeah, Dance India Dance वाला शो था शायद, right. So we basically went on that day to crosswords and sat together in the air condition and started reading books, and we had good time and good fun together. Today my son is a doctor and he's in the final year medicine. So, you see, it's all about, so I also thought, yeah, I mean, he's not going to be a dancer, he doesn't want to be doing that. And so that one small action actually, at that moment in time as a parent, influenced him and he influenced me, and we immediately changed the whole mindset. Same thing like for my friend, he would get up 5 o'clock in the morning and take his child to the the cricket ground and take him for cricket training, and I would get up at 5 o'clock in the morning and sit with him and read and study and do some interesting educational stuff. So not that we did not play sports, we went out and played all the sports, but the sports was purely for recreation, whenever we have time, whenever we want to, and our main focus, everyday routine, was reading. And that's the way we start doing this, and once so that the parents do have an impact. I still remember when I finished my 12th, there was some court case, medical education में as usual कुछ ना कुछ चल रहा था, and something was going on, and my mom I was in two minds, and I was thinking, okay, medical का education नहीं हो रहा तो चलो I'll join business, my father uncle लोगों का business join करके हम वो देखते हैं. I started going to their office, and then my mom held me and she says, what are you doing? Why are you not focusing on the admission process and filling? उस वक्त हमें फॉर्म्स अलग अलग कॉलेज के भरने पड़ते थे, एक ही सेंट्रल फॉर्म नहीं होता था. So you fill more forms, you see where the admissions have started and try to see. And I thought, okay,
That's something which I've always wanted to do, and I'm just getting carried away now because I don't want to, kind of get into a thought कि medical education में delay हो रहा है तो चलो यार business. And then when I saw the business, I saw okay, it's so easy to make money. यहाँ से खरीदो, यहाँ से बेचो, बीच में commission कमा लो. It's such an easy way. Why do you have to study so much for that? Now that one day when my mom told me and we sat together and she said that, what are you doing? And I said, okay, yeah, I'm wasting my time. I should not be doing this. I should be focusing on what I want to do. So those moments of life will decide the future journey of your child. And as a mother, as a father, as a parent, you will definitely be influencing, right? And then, Margaret Dalila, you're saying that I've been bleeding for 11 days now. Please go to your doctor. I'm currently 3 weeks pregnant. I've been bleeding plus passing little clots. I know if it's a sign of miscarriage. I'm cutting your. No. You need to go to your doctor. Margaret, you need to go to your doctor. Don't waste your time. If you're bleeding, you need to go to the doctor, and doctor will decide what needs to be done, right? Okay. So I will now finish up this conversation by saying a few tips, and then I'll take those questions also. There are so many questions which are coming. I'll run through the questions. Basically, when you have an influence on your child, it is a positive influence. Just as it can create a negative influence, it is also a positive influence. So you need to start thinking yourself that how to imbibe those good values in your day-to-day life between you and your partner, so that you can pass it on to the child. And the child needs to be taught these concepts. Child has no understanding of what is right, what is wrong. A child has no concept of what is truth and what is false. सच्चाई क्या है, झूठ नहीं बोलना है. ये कंसेप्ट भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. झूठ नहीं बोलना, ये सिखाने में लोगों को नानी याद आ जाती है. So you have to understand that these things are not going to be easy, right? And you need to see to it that if you do not yourself understand these concepts, you will not be in a position to help them. Now, yoga, exercise, good nutrition. Somebody asked about sattvic khana, sattvic ahar. Well, nutrition in itself has got a huge role to play. And when we talk about sattvic, it's not just about the content, it's also about how it is made and who is making it and with what emotions they are making it. So all those factors, and it is a known phenomenon. जब मम्मी गुस्सा होती है और बीवी गुस्सा होती है और वो खाना बनाती है तो खाने का टेस्ट अलग होता है, और जब वो खुश होती है तो खाने का टेस्ट अलग होता है. Everybody knows that, right? So that is a fact of life. So what emotions are going in the food and what quality of food is going in. खाने का टेस्ट अच्छा होगा तो आप you will have good amount of food and nutritious diet. If it is not good, you will जो भी आप normally खाते हैं उससे भी कम खाएंगे तो nutrition आपका मार खा गया. So there are so many factors. Then having good content of the food. Remember the other mantra I keep saying, it's not the quantity but the quality of food that matters. So it's not that you have to eat more, you have to eat smart. The mantra is don't eat more, eat smart. So that will help you not just to control your weight but also give good content to that. So you can, some people like singing, so you can sing some nice music or songs for your baby. I remember one of my patients, actually her husband made a whole, he started doing singing loris, and then ultimately he made a whole audio collection of loris which he sang, and then he actually went on to publish it, and he released the CD of music. Okay. Then there is another concept where you can actually recite stories. Reciting stories and reading more and more stories will help you to come up with these good concepts like the Jataka tales, the Aesop's fables, the Panchatantra, all these kind of stories. Or if you are a religious person, stories of little Krishna, stories of little Hanuman, stories of all these things. They will help you to use those stories, and at the end of the stories give a lesson to your child. That what did you learn from this, beta? Okay, this is what you learned. Okay, so this is a very nice way to keep talking about all these things, right? So this is another concept which I would like to tell you, right? So to summarize our whole conversation, we also need to understand that there is something called as understanding your emotions. Now a little bit about emotional intelligence to wrap up the session. Okay, so Daniel Goleman काफ़ी इंटरेस्टिंग बंदा है जिसने इमोशनल इंटेलिजेंस को कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बना दिया, and he used to do this training program all across the world, and it is not a new concept. Even in our Bhagavad Gita, it has been talked about. I think the quote was yam hina vyathantete pursam pursar sabha sam dukkham dhiram sukham vrtutva kalpate. So basically it means that even at the extremes of
difficulties, if you are able to maintain your calm, your happiness and sorrow is taken care of, Lord Krishna tells to Arjun that if you are able to do it, then you are eligible for salvation. So that's an interesting concept. So we have been talking about not just today about it, but it has been known fact from centuries that we need to control our emotions and we need to handle that. So a lot of these questions are coming, like Komal Sharma is saying that too much of mood swing, बहुत गुस्सा आता है, and there are a lot of things which are happening. So my suggestion to you is this, that we need to understand this. And what is emotional intelligence? It's just 4 pillars: self awareness, self management, ये दो हमारे, और 2 चीज़ सामने वाले के, empathy and how to behave socially with the other person. So अंदर का कंसेप्ट और सामने वाले का कंसेप्ट, ये 2 चीज़ हमने अगर मैनेज और मास्टर कर लिया, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट, मतलब खुद के इश्यूज़ को समझो और खुद के इश्यूज़ को मैनेज करो, इज़ द फर्स्ट 2 कंपोनेंट. एम्पैथी इज़ दैट इज़ what the other person is thinking, what the other person is feeling, and accordingly what we should do about it and how we should behave is the other concept. So if you are able to master this concept, then you will be able to handle the emotions better and you will be able to understand other person better. The biggest key here is आप अपने संस्कार को समझो, अपने पार्टनर या अपने अदर लोगों के संस्कार को भी समझो. ये मत सोचो कि मेरा संस्कार सही है उसका संस्कार गलत है, वो उसका संस्कार है ना. सो अगर उसे ऐसा लगता है कि वो चीज़ वैसा करना चाहते हैं तो सो बी इट, यू फोकस ऑन योर संस्कार. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में 2 प्रकार के लोग होंगे. एक है कि अगर बोला कि 8 बजे निकलना है तो वो 8 बजे निकलते हैं. दूसरे है 8 बजे बोलना है तो वो 8 बजे निकलते हैं कि जल्दी निकलो या टाइम पे पहुंच जाओ. और एक होते हैं ठीक है ना, 8 बोला है 8:30 बोला क्या ही फर्क पड़ता है, चलो 8:15 को निकलते हैं. एवरीबडी हैज़ देयर ओन कंसेप्ट. 8:15 वाला सोचा क्या पागल है यार, 7:45 बजे आके बैठ जाता है यार, इसका कोई टाइम काम धंधा है नहीं, फालतू वेला बैठा है, फालतू है. और जो 7:45 वाला बोलता है हाउ इनसेंसिटिव यू आर, हाउ कैन यू नॉट रिस्पेक्ट टाइम, यू शुड बी ऑन टाइम. हर इंसान को लगता है मैं सही हूँ, हर इंसान को लगता है हम ही सही है, ठीक है, हमारा कंसेप्ट सही है. सो अपने अपने संस्कार है. द फैक्ट इज दैट इफ़ वी अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट, then our irritability and anger will come down. And if we do not understand and we do not accept, then arguments and fights happen, and then that mood swings leads to problem. So that is the reason why you need to have that in mind and take care of that, right? And that will really help you to be more happier. Okay, now we're going to take some few questions immediately. If you have any comment or any statement or any tricks and tips about Garbha Sanskaar, please put down in the chat. In the meanwhile, I'll try to take some questions which were coming in the session, and I will quickly go through. Anu Sharma said, hello sir, मेरा last miscarriage 2016 Feb में हुआ था, उसके बाद मैं conceive नहीं हो पा रही हूँ. Should I go for IVF? Anu, it depends on your age, it depends on your husband's sperm count, depends on your tubal situation, depends on your AMH levels, and all those factors will decide whether you need to go for IVF or you can still try natural or any other tricks that you can follow. Jasmine Kaur, is my 6th run running? Can music affect in a positive? Please tell that I can use earphones with pain. Yes, Jasmine, we have answered that. You can use, there is no doubt about that. Adila Ranja is saying, sir, I do, she mentioned about, difficult environment in the house and घर में माहौल थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है. उन्होंने कहा था अपने पहले कि मेरा हस्बैंड अब्यूजिव थे, उस रीज़न से मेरी बेटी अब ज़िद्दी हो गई है, वो बहुत रोती है, डरती है, किसी से मिलती भी नहीं है. और अदिला आगे कहती हैं कि सर आई डू, मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट की बेटी में, अब वो थोड़ी सोशल हो गई है. सुबह उठते ही मैं उसको सलाम करती, गुड मॉर्निंग बोलती, सारे ग्रीटिंग्स वर्ड्स बोलती है. ठीक है अदिला, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू टीच हर. यू हैव टू गिव हर अ पावर ऑफ पॉजिटिविटी. आपको जो चीज़, अगर स्पिरिचुअलिटी पसंद है तो उसको आप हाउ टू प्रे सिखाइए, साथ में बैठें, उसके साथ में अच्छी किताबें पढ़ें, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं और उसको पॉजिटिव एनर्जी, उसको लव अफेक्शन दें. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लाड़ के अंदर उसकी हर चीज़ में हाँ में हाँ मिलाएं. नहीं, वो चीज़ मत करना. अगर बच्चे को ऐसा लगा कि मेरी हर हाँ में हाँ मिलते हैं तो वैसे ही नहीं मानेंगे. लेकिन अगर आपको ना भी बोलना है तो आप प्यार से ना बोल सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल, बच्चे को अगर ना बोलना है तो उन्हें ओके, माय ट्रिक वाज आई यूज्ड टू टेल माय सन, बेटा आई लव यू, आई नो यू वांट दिस बट आई कांट डू दिस बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट इज एक्सेप्टेबल. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. बेटा कम, आई लव यू, डैडी लव्स यू, कम कम कम. तो उसको प्यार मोहब्बत करके बात करना है, लेकिन करना नहीं, वो गलत काम नहीं करना जो चीज़ वो जिद करे फालतू. तो सो उससे क्या होगा कि वो लाड़ भी मिल रहा है और साथ में उसको डिसिप्लिन भी समझ में आ रहा है. ओके, Jasmine, yeah, we said that you can use the earphones. There is no doubt about that. मिताली डे से, सर मुझे 2 महीने होने वाले हैं, क्या बच्चे के
हार्ट बीट आ गई है। येस, एट द एंड ऑफ 6 वीक्स बच्चे की धड़कन दिखनी चालू हो जाती है सोनोग्राफी में। बलजिंदर सिंह से सर मेरे 32nd वीक में बेबी बॉय हुआ है, आज 1 मंथ का हो गया है, बेबी की सब रिपोर्ट्स शी है पर अभी आईसीयू में है, बेबी को बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए 32 वीक्स में अगर बेबी हुआ है तो ऑब्वियसली जल्दी हो, 2 महीने जल्दी हुआ है तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा आईसीयू से निकलने में। सो आप चिंता मत कीजिए। अगर उसके सारे रिपोर्ट्स ठीक हैं, अगर उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक है, अगर उसका विजन टेस्ट किया है वो ठीक है, अगर उसका न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हुआ है वो ठीक है, तो आप चिंता मत करिए। 32 वीक्स के बच्चे ही बहुत बढ़िया करते हैं, आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। संजुक्ता पात्रा, सर प्लीज़ बहुत कफ हो रही है, पेट अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा है, प्लीज़ 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 सजेस्ट मी। संजुक्ता पात्रा जी, देखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है तो रूल आउट कीजिए कि कोई एक्टिव इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर आपको एक्टिव इन्फेक्शन है तो उसका इलाज करना पड़ेगा, आपके डॉक्टर को दिखा के दवाई लेनी पड़ेगी। अगर वो ड्राई कफ है तो आप लॉजेंजेस ले सकते हैं। और अगर आपको रीगर्जिटेशन हो रहा है, पित्त हो रहा है, अंदर से एसिडिटी होकर बाहर आके रीगर्ज होकर आपको ये हो रहा है, तो उसकी दवाइयाँ अलग होती है। तो ये आपके डॉक्टर को चेक करा के उसके हिसाब से ले लीजिए। और रिगार्डिंग द नॉच पेट साफ़ नहीं हो रहा है, नहीं कॉन्स्टिपेशन इज़ वेरी कॉमन। मेरा यूट्यूब पे वीडियो है कॉन्स्टिपेशन इन प्रेगनेंसी पे, आप प्लीज़ देखिए, मैंने उसमें बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स बताए हैं। मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको बहुत ज़्यादा फाइबर्स लेना है, बिकॉज प्रेगनेंसी में आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, तो इस वजह से आपको पॉटी साफ़ नहीं होती है। जहानोरो से सर आफ्टर फर्स्ट सी सेक्शन अगर हम लेबर के नेचुरल कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? आप नेचुरल स्टार्ट करने के लिए आप कोई दवाई मत लीजिए या कैस्टर ऑयल मत लीजिए या इंडक्शन मत कराइए। पहले आप देखिए कि आपका सर्विक्स फेवरेबल है कि नहीं, यूट्रस फेवरेबल है कि नहीं, बेबी हेल्दी है कि नहीं, एंड देन उसके बाद आपके डॉक्टर जो इलाज करते हैं उनके ऊपर छोड़िए। हम इसको वी बैक कहते हैं, वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन। नॉर्मली हम पीवी करके देख के स्वीपिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स करते हैं और उसके हिसाब से हम केयर करते हैं। ओके, then we have a question from let me go down. श्रुति फ्रॉम कर्नाटका, हमेशा नेगेटिविटी के बारे में बातें करते हैं, घर में मुझे पिंच करके नीचे दिखाते हैं, कितनी भी बोलने की कोशिश करूं नहीं हो रहा है, कैसे इग्नोर करूं? श्रुति देखिए, आई टेल यू वन वेरी स्मॉल थिंग, nobody in the world can influence you to be feeling bad or sad या नीचा, ठीक है? Nobody in the world. So अगर आप सोच रहे हो कि दूसरे लोग आपको नीचा दिखाते हैं तो वो उनके संस्कार, वो आपको नीचा नहीं दिखा सकते। आप जो हैं वो हैं, उनके बोलने से आप नीचे या ऊपर नहीं होने वाले हो। अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को मत दो। ऐसा मत सोचो कि सामने वाले ने बोला मैं नीचा तो मैं नीचा, सामने वाले ने बोला तुम बेटर हो तो बेटर हो। तुम अच्छे हो सामने वाला का डेफिनेशन नहीं है, तुम अच्छे हो ये आपका डेफिनेशन है। अगर आप खुश हैं और आप पॉजिटिव हैं तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूरी है, आप ये बात समझें कि जब कोई आदमी क्रिटिसाइज़ करता है या कुछ भी बोलता है, वो उसका नज़रिया है। आप उसमें से जो पॉजिटिव टिप्स हैं उसको लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे को बेटर करने में बेहतर हो सकती है तो मैं वो चीज़ ले लूँ। उनको कन्विंस करने का मतलब नहीं। अगर आप बोले ऐसा मत बोल, ऐसा मत कर, वो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जिसको जो बोलना है वो बोलेंगे, जिसको जो करना है वो करेंगे। आपको उससे विचलित नहीं होना है, आपको उससे डिस्टर्ब नहीं होना है। So Shruti, don't get disturbed, and if you still are really worried about it, I would suggest that please connect with us or any other good counselor, and you can get yourself counseled and work on it. Don't let the negativity affect you. Okay, don't worry. Swati says that she does creative thinking like making decorative items. Yes, you know, making artistic things is something which really keeps your mind occupied. Whether it is painting, whether it is craft, whether it is making things, is good. सिद्रा कबीर से मेरी डिलीवरी को 2 मंथ हो चुके हैं और मेरे बाल बहुत गिरते हैं, वो क्यों? येस, बिकॉज ऑफ इनिशियल हार्मोन चेंज ऐसा होता है। हैव गुड फूड, मल्टीविटामिन्स लीजिए, न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, आयरन सप्लीमेंट्स अगर नहीं ले रहे तो लीजिए। ग्रेजुअली इट विल कम डाउन एंड एवरीथिंग विल बी फाइन इन प्लेस। डोंट ओवर डू थिंग्स, बिकॉज इनिशियली बाल गिरते हैं, फिर देन सेटल हो जाते हैं, सब ठीक हो जाता है। ठीक है। Too much sleeping can affect the baby during pregnancy. Jasmine is asking. Not really. No. Too much sleeping does not affect your baby, but appropriate rest. Normally we say in pregnancy अगर आप 10 घंटे भी रेस्ट करते हैं तो इट्स अच्छी बात है, बिकॉज जब आप रेस्ट करते हैं तो बेबी को ब्लड फ्लो अच्छा जाता है। लेकिन अगर आप दिन भर सो ही रहे हैं और उठ ही नहीं रहे हैं, वॉक ही नहीं कर रहे हैं, देन इट इज़ डेंजरस, बिकॉज आपके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। यू नो, इट कैन बी ब्रीदिंग इश्यूज, एस्पिरेशन इश्यूज, इट कैन बी डीप वेन थ्रोम्बोसिस इश्यूज, वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पर अगर आप पूरे दिन बिस्तर में नहीं हैं लेकिन आप 10 घंटे 8 घंटे सो रहे हैं और बाकी टाइम एक्टिव हैं तो इट्स ओके, इट्स नॉट गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ओके। सुमन से सर मेरा बेटा 3.4 ईयर्स का है, वो कोई
सेंटेंस सही से नहीं बोल पाता। देखिए अगर थोड़ा भी डाउट लगता है ना तो अच्छे अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं। अगर आपको भी नहीं मिलता तो हमारे लेनेस्ट से कनेक्ट कीजिए, वील फिक्स अप फॉर सम ऑनलाइन कंसल्टेशन, दे विल डू सम नाइस स्पीच थेरेपी प्रोग्राम फॉर यू सो दैट योर चाइल्ड विल डू बेटर। सो अगर थोड़ा भी आपको लग रहा है कि सुमन की रूटीन से अलग है तो आप प्लीज़ मदद मांगिए, आवर टीम विल हेल्प यू। My mother-in-law says if I sleep a little, it will affect the growth of. Is it true? No, 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 no. It is not. So, in fact, when आप रेस्ट करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बेबी को डाइवर्ट होता है तो बेबी का ग्रोथ बेटर होता है। तो अगर आप सोओगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं सो जाऊंगी तो बच्चा दब जाएगा या बच्चे को खून कम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। Dr. Sophia Khan, at 37th week, does fetal kick decrease? Sometimes I don't feel the fetal kick. Fetal kicks feel very light. Yes, Sophia. Initially, जगह बहुत होती है. That's why the baby is having a lot of space to move. When the pregnancy is reached 37, 38 weeks, then the space becomes less. Babies become big. Liker भी volume भी थोड़ा सा as compared to what it was at 34, 36 weeks. उसके comparison में 37, 38 weeks में थोड़ा सा कम दिखता है क्योंकि जगह कम होती है. Baby is big. That's why the movement space is less. That's why movement जो kick है वो थोड़ा lighter feel होता है. That's okay. And plus Sophia, Dr. Sophia जी वो गुलंटी नहीं मार रहा है. It is not taking somersault. It's not moving all around. It's just moving a little bit because there is no space, because it is got fixed in a position. So that can also be a cause for it, right? रेनू सिद्धार्थ सर, मेरा सी सेक्शन हुआ था, 3 मंथ हुआ है, अब मुझे कट वाली जगह पे सुन रहता है, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। देखिए कभी कभी वहाँ की जो नर्व्स होती है ना वो थोड़ी सी दब जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसे हम कहते हैं नर्व एंट्रैपमेंट सिंड्रोम, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। Gumata Nagri, I think that's Shruti from Karnataka. She says, thank you sir, means a lot for me. Thank you so much. Thank you for your kind words. And I hope जो हम बातें कर रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, is going to help you Shruti, and it will make you think positive. There are a lot of people who have gone through difficult times, and trust me, people do come out strong and better after all these things, right? Ruchi Chabra says, vomiting in 26 week, is it normal? वॉमिटिंग ऑल 9 months में हो सकते हैं, तो इट इज़ क्वाइट फाइन, बट अगर एकदम सडनली बहुत ज़्यादा हो रहा है तो देखिए कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, बाकी आपको देखना पड़ेगा। SM के खान से, सर कब बेबी के किडनी फुली फॉर्म हो जाते हैं? वेल इट इज़ राइट फ्रॉम द सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही फॉर्म होने चालू हो जाते हैं, धीरे 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 डेवलप होते रहते हैं, एंड देन उसके बाद में द किडनीज जो नीचे होते हैं धीरे धीरे असेंट होकर ऊपर की तरफ जाते हैं। सो इट्स अ जर्नी फॉर द किडनी, सो एवरी टाइम द किडनी कीप्स चेंजिंग एंड देन थिंग्स हैपन। Right, so with this we will end. If there is any good comments that you have, if you have liked the session, please put a like button and write down the best part of the session that you like, so we know that this is what you like about it, so that we try to figure out more things and more concepts about that. So आज हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया what is the concept of गर्भ संस्कार, what is the meaning of संस्कार and the good values, what are the different types of good values that you can think of, then how will it affect the baby, what is the way it can affect the baby, and then if it is affecting the baby, what are the things that you can do to try to prevent it, and what are the things that you can do to try to improve it, how to balance your mind in case of mood swings and issues, difficulty in the house, and we have also discussed the concept of emotional intelligence. I think this is the kind of thing that I wanted to discuss in the concept of गर्भ संस्कार, because लोगों को लगता है गर्भ संस्कार मतलब म्यूजिक चालू कर दिया हो गया, मंत्र चालू कर दिया हो गया, 2 बुक्स पढ़ ली हमने रिलीजियस हो गया, दैट्स नॉट गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार इज thinking positive and thinking nice and learning about the good things which you can pass on to the baby, and also eating right, sleeping right and doing right. All these things together form the Garbha Sanskaar, and that's the concept of it. Thank you so much for your kind hearing, and thank you very much for all the good comments. Ruchi, Shiva, Shilpa, Geeta, thank you so much. Looking forward to connect with you again. Thank you.